Okay, so hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. So, as you all know, that today is our second day of Pull Me Up Cake. So today we are going to see that how you're going to like ice your cake and how you actually are going to make that ganache and how it is going to be that flow in the consistency that you are able to make it in a pull me up cake. ओके सो आज हमारे जो पुल मी अप केक है उसका सेकेंड डे है एंड आज आप सीखेंगे कि वो पूरा का पूरा जो पुल मी केक का जो आइसिंग होता है एंड वो जो गनाश होता है जिसको आप ऐसे पुल करते हो और वो पूरा ऐसे करके नीचे आ जाता है वो बेसिकली कैसे बनता है बेस कैसे बनता है वो हम लोगों ने कल सीखा था आज हम सीखेंगे कि हम कैसे ये पूरा का पूरा जो गनाश है एंड जो पूरा का पूरा आइसिंग है वो बनता है ओके एंड प्लीज डोंट वरी एवरीवन वी विल be taking all the question and queries and we will also repeat everything in Hindi and English so you do not need to worry about anything हम पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कवर अप करेंगे और हम लोग जो है सारा का सारा चीज जो है ऑलरेडी हर चीज ऐप पे भी अपलोडेड है सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज भी हम लोग लेने का ट्राई करेंगे ओके सो यस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन ओवर टू यू कमलप्रीत Hi everyone. Yesterday we have prepared the vanilla cake and we have learned how to slice it with the equal slices. Today we are going to give it a coat and we are putting up the sheet and we got to know how to make the top ganache which flows and give the effect of pulmi cake. So shall we start? yes Kamalpreet I think we can start now Yeah. So yesterday I have prepared this cake and I have wrapped this in a cling wrap so that it doesn't come in contact with the air and I have kept it in the refrigerator. तो कल हम लोगों ने जो केक बनाया था हम लोगों ने बस उसको ऐसे आप देख सकते हैं क्लिंग रैप करके हम लोगों ने उसको फ्रिज में रख दिया था सो क्लिंग रैप करके हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें किसी भी तरह की एयर जाए एंड वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाए तो आप इसीलिए ऐसे क्लिंग रैप करके अपने केक को फ्रिज में रख सकते हैं ओके Next, we are going to make a normal simple syrup with sugar and water. नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम ये पूरे केक को अपने शुगर सिरप में सोक करेंगे शुगर सिरप यानी कि जो नॉर्मल शुगर होती है एंड चीनी होती है उनको आप मिक्स कर लीजिए रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर रहेगा और उसी में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो वो बन जाता है शुगर सिरप अगर आपको लगता है कि आपका केक ऑलरेडी बहुत स्वीट है और आप इसमें और शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो इसमें आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड फ्लेवर if you don't इफ want to add sugar you're feeling your cake is very sweet already and you don't want to add extra sugar you can just add vanilla essence to give a good flavor. सो Next we अभी have तक our हम whipped लोगों ने cream. Yeah, Saloni please. या सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने बस जो हमारा कल केक बना था हम लोगों ने उस केक को क्लिंग रैप करके अपने फ्रिज में रख दिया था तो हमने बस अभी अपने केक को क्लिंग को बाहर निकाला है फ्रिज से एंड अब हम लोग उसके ऊपर यूज करेंगे शुगर सिरप so till now what we have done we have just taken out our made base from the refrigerator and now we are just going to soak it in the sugar syrup Now I have this whipped cream which we make yesterday and I have surface wrapped it. Surface wrap is when your cling wrap touches the surface of the whipped cream. That is surface wrap. And I am going to use this whipped cream now. This is little hard for the use if you can see. So what we are going to do is give it a good cut and fold method we use, right? So we are going
to use the cut and fold method and make it little soft. अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपनी विपिंग क्रीम को फ्रिज में स्टोर किया था। जब आप विपिंग क्रीम को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आप उसको ऊपर से हल्का सा क्लिंग रैप से रैप कर देंगे। एंड जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे आपकी विपिंग क्रीम हल्की सी स्टिफ हो गई होगी। तो उतनी स्टिफ विपिंग क्रीम के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको हल्का सा सॉफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसको हल्का सा वो करते हैं, मिक्स करते हैं। और मिक्स करने का मेथड जो होता है वो होता है कट एंड फोल्ड मेथड, जो हम लोगों ने कल सीखा था, ताकि हमारे विपिंग क्रीम में जो भी एयर है वो वैसी ही बनी रहे। बिकॉज अगर उसमें एयर हल्की सी भी रिड्यूस होगी तो आपकी विपिंग क्रीम खराब हो जाएगी। So next I'm going to ice this cake. We always use the top layer in the end. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? Yes, please. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपना जो विपिंग क्रीम है उसको आइस करेंगे अपने केक के ऊपर। एंड जब भी आप अपना विपिंग क्रीम यूज कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो आपकी केक की टॉप लेयर होती है वो सबसे नीचे रहती है, एंड देन उसके ऊपर आप बाकी के लेयर्स को यूज करते हैं। ओके ओके कमलप्रीत, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस हियर। Yes. So somebody was asking that in yesterday's session, when you were using the baking soda and baking powder, did you use 1 teaspoon or 1 tablespoon of it? Teaspoon. It's mentioned in the PDF also. Okay. No, Anamika, we haven't added anything in the whipping cream to make it stiff, since we kept it in the refrigerator. So that is why it has become a little stiff. By after cooling down, it has just become a little stiff. Yes. And now I have put a cloth on my turntable and then the base so that the base doesn't move while icing. अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अपना जो टर्न टेबल था उसके ऊपर एक हम लोगों ने डाल दिया है कपड़ा। वो कपड़ा बेसिकली हमने इसलिए डाला है ताकि ये जो हमारा बोर्ड है ना वो इधर उधर स्लिप ना हो। Now I have put on some whipped cream on this and I am putting my first cake. This is the top layer we have cut it yesterday and pressing it a little so that it stick to the board. तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना बेस जो हमारा केक है वो अच्छे से हमारे बोर्ड पे ही रहे, स्टिक रहे, इसके लिए हम लोगों ने सबसे नीचे हल्का सा विपिंग क्रीम लगाया। उसके ऊपर से हम लोगों ने अपना जो केक का टॉप लेयर है वो रखा है और हल्के हाथों से प्रेस करके उसको अच्छे से अपने केक बोर्ड पे हम लोगों ने स्टिक कर दिया है। I have a little dome on my cake on the top, so I am cutting it off to get a flat layer. If you already have a flat layer, you don't need to do this. अभी आप जैसे देख सकते हैं कि कमलप्रीत का जो केक है उसमें हल्का सा उनको डोम शेप मिल रहा है, राइट? तो डोम शेप अगर सबसे नीचे रहेगा तो अगर आप उसके ऊपर केक रखेंगे तो वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हल्का सा डोम शेप का उसके ऊपर रख रहे हो तो उसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम उसको फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के लिए क्या होता है कि आपको ऊपर की जो लेयर है उसको हल्की सी कट करनी होती है। जो भी आपका डोम होता है उसको आप हल्का सा कट कर देंगे तो ताकि आपका जो बेस है वो प्रॉपरली फ्लैट हो जाए। ओके Yes. So I'm finally putting up the whipped cream on this. Oops, I'm sorry. I have to soak this. So the simple syrup we have made with vanilla essence, I'm soaking it a little with this. I'm soaking it a little more because I made this sponge yesterday and kept it in the refrigerator, so it's a little hard. So to give it a soft, somebody was asking me that our base is a little hard and it's not as soft as it should be. So this is the way you make the sponge soft.
सो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो शुगर सिरप लगाया था, हम लोग उससे अपने केक को सोक कर रहे हैं। सो बेसिकली केक को इसलिए सोक किया जाता है शुगर सिरप से, ताकि आपका जो केक है, अगर आपका केक बहुत हार्ड है तो इसकी वजह से वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, प्लस आपके केक को हल्का सा मॉइस्चर भी मिलेगा, बिकॉज केक्स जनरली काफी ड्राई होते हैं। ओके ओके, एंड somebody was saying, अच्छा, Kamalpreet, we are making a chocolate pull me up cake, right? This is one base is vanilla. You can skip. You can make chocolate base also, but yes, on the top, the ganache which flows is made of chocolate. Okay. And So you can see I have soaked it and I have put on some whipped cream. And you always have to hold your palette knife like this, and you have to go in this movement, rotating the board a little. This is so, important so that all the crumbs get stuck to this cream and get inside the cake. so अभी आप देख सकते हैं हम लोग अपना विपिंग क्रीम इस पे पुट कर रहे हैं। विपिंग क्रीम जब आप यूज कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो पैलेट नाइफ है वो आपको ऐसे होल्ड करना है, एंड आप अपने जो टर्न टेबल है उसको प्रॉपरली मूव करते रहेंगे। ओके, ताकि आपका जो पूरा का पूरा जो विपिंग क्रीम है वो अच्छे से एंड इवनली स्प्रेड हो सके आपके केक बेस पर। ओके, एंड somebody was I'm saying doing very that, yes, Kamalpreet, just a second. So somebody was saying that why are you not using the bread knife? So guys, understand there are a lot of people, like if you have a bread knife, it is very easy to cut the cake using a bread knife. I totally agree with that. And the process of cutting it with the using a bread knife or like the normal knife is going to be same. The reason why we did not show it with that is because there are a lot of people who do not have it, and they wanted to learn it. We got this suggestion a lot कि we wanted to see how it is done using a normal knife, and that is why we are doing it, because process same होगा I have the दोनों का कट professional करने का। wire cutter. Yes, but I have the the thing professional is, wire cutters also, but I didn't. Sorry, Saloni. no, nothing. Yeah, I have yeah, I have professional wire cutters also, but I didn't show you that because that is not easily available. I'm using a normal knife because that is easily available with everyone. Ashwini, don't worry. We will tell you how to make the ganache. Once we will come up to that, you will know the measurement and everything and the consistency. Don't worry about it right now. Okay. You can see that I have smoothened up the edges also. We put this layer in the end because this layer is not properly in shape. That's why we put it in the end and we are giving it a shape with the whipped cream, doing the crumb coat, covering up all the crumbs, and we are giving it a proper shape so that it give a good base. Can you see all the crumbs are putting? Uh, So this is very important that you have to make your base very perfect. So because this is the base for the complete cake. Kamalpreet, when you're working with the whipping cream, no, तो आपका हाथ जो है वो बार बार कैमरे के सामने आ जा रहा है, तो वो Okay, बेसिकली okay. चुप जा रहा था। सो नेक्स्ट लेयर में ना प्लीज हल्का सा वो देख लीजिएगा। Yes. I have put a side camera also. You can spotlight on that. Only add me from the another device. I think it's disconnected. The side camera. You wanted to like get added? Yes, it's. I'm out of the meeting from my another camera, the side camera. You can just click on join and you will be able to join. Yeah. Abhi because the waiting is, हाँ. And Kamalpreet, if possible, can you please show that professional cutter also, because there are a lot of people who want to see Sure, that how it sure. I looks. will. I will. Okay. And Pallavi, Like that is absolutely fine if you don't want to believe it. And
Yeah, we don't have anything to say for that. Acha, Kamalpreet, there was a question. Yes. I'll show you the कि butter in the end. हाँ, we'll show that in the end, so that will be much better. Yeah. So somebody was asking कि generally जो pull me up cake होता है वो कितने inches tall होना चाहिए? There is nothing specific, but yes, if you make I have used a 5 to 6 inches pan for this cake. I would suggest not to use more than 6 inches pan, so you will get a good height for a pull me up cake in 1 kg. If you want to make half kg, then you have to take a smaller pan so that you can get a good height. Okay. सो जब भी आप कोई ऐसा पुल में आप केक बना रहे होंगे, जैसे अभी हम जो बना रहे हैं वो 1 kg का है, तो हम लोगों ने 6 इंचेस का टिन जो है वो यूज किया है. सो हम लोगों ने 6 इंचेस का टिन यूज किया ताकि हमें एक प्रॉपर हाइट मिल सके. इफ इन केस आप छोटा करेंगे अपना केक, मतलब ½ kg का केक बनाएंगे, तो आपको अपना टिन का साइज भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको एक प्रॉपर हाइट मिल सके अराउंड 6 इंचेस की, क्योंकि तभी वो जो गनाश है वो फ्लो करके थोड़ा सा नीचे आएगा. ओके. And yes, So Swada, we have just mixed the vanilla essence with this with the water to get that syrup here. Yes, Kamalpreet. and now I have added a blueberry compote. I'll show you the company. And I'm just mixing it with the whipped cream with the help of a spoon only. And finally, I will give it a level with a palette knife. Okay. So, Abhi, you can see we are using this is blueberry, right? Yes. Okay. So, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्लूबेरी सॉस, एंड हम लोगों ने उसको नॉर्मल अपना पैलेट नाइफ यूज करके उसको स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग. Firdaus, I'm really sorry that you did not got any response. I will request you to please send the screenshot once again. And if in case you did not get a reply there also, just send us the screenshot on our Instagram. It is called as Ask Pankhuri. You can just send us the screenshot there and we will try to get your query solved there. Okay? Okay, so Kamalpreet, there were a few more questions. Yes, please. Okay. Just a second. Okay, somebody was asking, "Ki ma'am, can we cut the cake using a thread also?" Yes, you can cut that, but that is not the appropriate way. Okay, and yes, Saloni, the silicon molds are available on Amazon very easily. You can get them there, and I will try to put them on the app also so that it gets a little easy for you to get it. Okay. Okay, so somebody is asking that how much of whipping cream is needed for making 1 kg of cake. If you're making a pull me up cake, then 100 grams is fine because in this we have only crumb coat. If you're making a complete cake, so 200 grams you need for the decoration and for the final layer also. ओके. सो अगर आप 1 kg का केक बना रहे हैं एंड सपोज कि आप सिर्फ पुलमी अप केक बना रहे हैं, तो पुलमी अप केक में सिर्फ क्रम कोटिंग होती है, फाइनल कोटिंग नहीं होती है. तो इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम्स ही लगेगा विपिंग क्रीम. बट अगर आप एक प्रॉपर केक बना रहे हैं जिसमें आपको दोनों कोटिंग करनी है एंड आपको वो डेकोरेशन करना है, तो आपको 200 से 250 ग्राम्स विपिंग क्रीम लग सकती है. ओके, 1 kg के केक के लिए. So now I have taken a palette knife like this. This is little angular. Can you see? This will help you. If you're a beginner, this will help you get it smoothened really good. Rather than So palette knife, if you invest in both a palette knife and a knife, this will give you a good finishing. सो अभी आपने देखा, अभी हम लोगों ने एक एंगुलर नाइफ यूज किया था, पैलेट नाइफ यूज किया था. जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये नाइफ बहुत अच्छा होता है बिकॉज आपको बहुत इजीली वो मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छा क्लीन इफेक्ट आपको इससे मिल जाएगा. ओके, सो देयर वर फ्यू मोर क्वेश्चंस. सो Yes.
somebody was asking that क्या हम लोग ये इसकी जगह पे हम लोग जो ब्लूबेरी यूज किया है उसकी जगह पे क्या हम पाइनएप्पल क्रश भी यूज कर सकते हैं? Yes, this is the fruit I am showing you. But if you want to change your vanilla cake into any fruit cake, you can use any crush, any compote, any sauce, fruit crush, fruit compote you can use to fill it up. Okay. In base, we don't put any fruit while making the cake, but in the filling, we put the fruit compote or fruit sauces. सो अभी आपने जैसे देखा यहाँ पे कमलप्रीत ने लगाया था अपना ब्लूबेरी सॉस। अब अगर आप ब्लूबेरी की जगह कुछ और भी चाहें तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पाइनएप्पल यूज कर सकते हैं, आप मैंगो क्रश यूज कर सकते हैं, आप कोई भी क्रश यूज कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ओके। एंड ये जो क्रशेस एंड सॉसेस हैं, कमलप्रीत, इज दिस सॉस मेड एट होम और इट यू बॉट इट फ्रॉम द मार्केट? I got it from the market. Okay, so this is the blueberry. So the blueberry sauce that you're using, you got it from the market. What is its name? Okay, this is by Mala's Mala. blueberry. Okay, just a second. I will put that camera in the spotlight. Just a second. Yeah, it's in the spotlight. So yes, guys, you can see this is the company. I mean, this is the brand that Kamalpreet uses for the crushes or for the sauces. तो ये माला का ब्लूबेरी सॉस है जो उन्होंने यूज किया है। आप इसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का, मतलब कोई भी फ्रूट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। Yes. So moving on to next layer. You can use any crush. You can also make this at home, but blueberries are not available every time, and it is very costly when it is available. So I think using up the compotes are good idea. Yes. So Compotes or आप crushes, whatever you get. ओके, सो यस, आप अगर क्या वजह है, हाँ, सो आप ये चाहें तो घर पे भी बनाने को बना सकते हैं, बट घर पे बनाना बेसिकली काफी कॉस्टली होता है, काफी मेहनत का काम होता है। तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। एंड आई थिंक माला के जो ये आते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक 200 या ऐसे का ही होता है जहां तक मुझे पता है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, एंड बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। As ओके। you can see, I'm making up the second layer. I have brushed it with the syrup we made, and now I'm putting up the whipped cream. सो You have to अब use your hand like this, and you have to do it on this motion. अभी आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना नॉर्मल whipped क्रीम वापस से लगाया, एंड उसके बाद हम लोग इधर साइड से उसको वो कर रहे हैं, आई मीन स्मूदन अप कर रहे हैं। Yes, we are smooth. मैंने कैमरे का एंगल हल्का सा चेंज किया है ताकि आप लोग को दिख सके कि वो बेसिकली कैसे हो रहा है। आई होप सबको अभी ये कैमरा एंगल काफी फाइन होगा। ओके। I'm putting some whipped cream on the sides where I don't have the cream. सो अभी जहाँ जहाँ पे भी Finally, आपको लगे, जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि क्रीम नहीं है, आप वहां वहां पे वापस से क्रीम रख के एंड अब बस ऐसे अच्छे से उसको वो कर देंगे। ओके। I'm finally doing the sides also. Can you see our level? Same level it's having. Keep your knife straight to the layer which is bigger and keep smoothing it. The cream will take its place itself. जब भी आप whipping क्रीम के साथ काम कर रहे हैं साइड्स पे, तो आपका जो नाइफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एंड उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रेट रखते हुए स्मूथ अप करते जाएंगे।
ओके, नाइफ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और अपने क्रीम को आप आगे की तरफ ऐसे स्प्रेड करते हुए स्मूथ अप करते जाएंगे। Okay, Sneha, the difference between crumb coat and the final coat is very simple. Crumb coat basically is the first coating of your whipping cream that you're doing and is done to get rid of all the crumbs that will be there in the cake. So that when you start doing the final coating, nothing comes in between and you would get a very smooth finish there. And after crumb coating, the second coating that you do is called as the final coating. Okay. तो अभी हम लोग क्रम कोटिंग और फाइनल कोटिंग में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि जब आप विपिंग क्रीम के साथ काम कर रहे होते हैं और आप जो सबसे पहली लेयर करते हैं विपिंग क्रीम की, उसको हम लोग कहते हैं क्रम कोट। क्रम कोट बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो भी क्रम्स हो आपके पूरे के पूरे केक में, वो सारे के सारे हट जाएं एंड आपको एक बहुत ही स्मूथ केक मिले, ताकि जब आप बाद में फाइनल कोटिंग करो तो कोई भी चीज बीच में ना आए एंड आपकी फिनिशिंग बिल्कुल स्मूथ हो। Okay, Kamalpreet, is there any specific measurements that you have used to make the sugar syrup, or it was just random? No, 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 no. As per your taste, you can add sugar, and if you feel that the cake already have a lot of sugar that is good for your taste, you can just add vanilla essence. Okay. Mm-mm-mm. Okay, Sarah, we would have loved to tell you how you're going to make all these sauces at home, but Abhi, we have to stick to the module to complete it. Okay, but don't worry. If you all want to learn this, we will try to come up with this specific class also. Okay. We can do a different class for the flavorings. Yeah. Okay, so this is the top layer. Can you see this is flat layer? So we are putting it on the top so that our top is neat after doing the icing. सो अभी आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाली लेयर थी हमारे केक की, हम लोगों ने उसको सबसे ऊपर रखा है। रीजन क्या था कि हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है एंड स्मूथ होती है, तो इससे आपकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो भी बिल्कुल फ्लैट एंड स्मूथ बनेगी। इसके लिए हम लोग सबसे नीचे वाली लेयर को सबसे ऊपर रखते हैं। ओके, एंड गाइस, whatever questions are there for the sauce, just wait for a minute. We will cover the sauce part also. I mean the ganache part once this is done. Okay. And then we will be taking all the ganache वाले questions. जो भी गनाश से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, जब हम गनाश पे आएंगे तो हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके। So I have soaked it with the syrup we made, and I have put in some of the whipped cream, and I am finally spreading this whipped cream on top also. ओके, संगीता, फॉर योर क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मार्केट से जाके जो विपिंग क्रीम होती है वो खरीदनी पड़ेगी। नॉन डेयरी विपिंग क्रीम आपको खरीदनी पड़ेगी। आप घर की जो वो मलाई होती है आप उससे नहीं बना सकते, आपको मार्केट की नॉन डेयरी विपिंग क्रीम लेनी पड़ेगी। Okay, also guys, understand that it is very normal for your whipping cream to melt after a point of time, because if your whipping cream will be out for a longer period of time, it will start melting. It is very normal. And we also covered it yesterday that if in case you have whipped it, and once you have whipped it and you are just going to start decorating, it might start melting, or there could be two reasons for it. One could be that the atmosphere around you is very humid or hot. Another could be that you haven't whipped your whipping cream well. So these are the two reasons which possibly make your whipping cream melt very soon. But yes, since whipping cream are used at chill temperature, so as jitte for the longer period of time you're going to keep it out, it will start melting.
आप जितनी ज्यादा देर के लिए अपने whipping cream को बाहर रखेंगे वो उतनी ज्यादा जल्दी मेल्ट होगी. ओके. यस मीनू, ट्रोपोलाइट बहुत अच्छी है, आप Top with an ट्रोपोलाइट यूज. angular. यस. So on the कमलप्रीत. side, I'm taking out the excess cream with the help of a scraper. Can you see that? Yes, it is visible. The excess water and the excess cream is coming out. You just have to keep rotating, keeping your scraper straight. And with the help of an angular knife, your knife should be clean for getting clean edges on the top. And with the help of scraper, I'm taking out the excess cream. Although this cake doesn't need to be neat as the ganache will come over, but for the normal cakes, you have to clean your edges this way. So finally, we are going to take the sheet. So we have cake sheet we have. So, what you just saw was what we did, that in order to get the very clean edges, you need to keep cleaning your knife so that there is no excess of cream there. Otherwise, if there will be any excess of cream, you will not be able to get the clean edges. So keep cleaning your knife, keep cleaning your what you say, um, what Scraper. was that word? Scraper. Yeah, keep cleaning your scraper so that you end up getting a very smooth finish. Okay. And And next we are you going have to use, yeah, yes, have to Kamalpreet. use the normal tissue paper to clean the board so that we can put the sheet neatly. So अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस नॉर्मल टिश्यू पेपर से अपना बोर्ड क्लीन कर दिया है. Okay, and somebody was asking, DP, DP for your question, you can just clinch wrap your cake and keep it in the fridge, and then it will not get hard and you will be able to store your cake also. That is the reason why we clinch wrap it, so that it won't absorb a lot of air and become very hard. So just clinch wrap it properly and it will not become hard. And finally, we have put up the sheet. This is, you called it acetate sheet, OHP sheets. There are many names, but most commonly used is acetate sheet. Finally, we have wrapped it here and we are going to put a tape on it. सो अभी आपने क्या देखा, हम लोगों ने ये जो नॉर्मल शीट होती है इसे कहते हैं एसीटेट शीट. दिस इज कॉल्ड एज एसीटेट शीट. प्लीज डोंट वरी, वी हैव listed it on the app also, you can check it there. It is called as an acetate sheet. इसे कहते हैं acetate sheet. and आप इसको अपने केक के अराउंड ऐसे रैप करते हैं. रैप करने के बाद जब आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ अच्छे से रैप डाउन हो गया है, उसके बाद आप एक टेप लेंगे एंड जो आपके शीट के एजेस हैं उनको स्टिक कर देंगे. ओके. यू विल जस्ट रैप इट लाइक दिस अराउंड योर केक एंड देन you will just put a tape at the edge and it will be done. Don't worry, I will write it down. Just a second. Yes, Nishant, there is a possibility that you did it very tightly. Look, you have to wrap Yes. your sheet in a way that it is just like stuck a little, not very hardly. Okay. Not very बहुत tight and lightly. not very loose. हाँ.
Just move it a little and you will understand. You can pull it like this. Is my top camera is unfocused, right? Just a second. I will just put that. Yeah, done. This Yeah. one, top You camera can is in just focus. lift the sheet here to check that it is easy to lift, and then you can put it back. This is So the way of अगर working. ये चीज चेक करना है ना कि आपकी शीट अच्छे से उसमें लगी है या नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं अभी इन्होंने कमलप्रीत ने लगाया हुआ है, तो हमने हल्की सी अपनी शीट को ऊपर की तरफ मूव किया। ओके, जब हम लोग ने उसको हल्का सा ऊपर की तरफ मूव किया तो वो इजीली मूव हो गई। एंड मूव होने के बाद हम लोग को पता चल गया कि बहुत टाइटली वो वहां पे स्टिक नहीं है, क्योंकि अगर बहुत टाइटली स्टिक होगी ना तो वो आपके केक को लेते हुए, लेयर्स को लेते हुए निकल आएगी। तो इसके लिए Right. बहुत इसलिए आपको चेक करने के लिए आप ऐसे हल्का सा उसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। आप जब देख रहे हो कि हाँ वो इजीली हल्की सी मूव हो रही है, मतलब अच्छे से वो स्टिक हो गई है प्रॉपरली, बहुत टाइट बहुत ढीली नहीं है, एंड देन आप ऐसे कर सकते हो। Okay, so somebody is asking कि do we need to keep the cake in the fridge before putting the ganache on it? No, no, that is not needed. But I'm melting my chocolate, so yes, I am keeping it in the fridge. Like if you have prepared the ganache in advance, that's okay. I am making it. It's very hot in here, very humid, and I'm not working in AC, so I'm keeping it in the fridge. ओके, सो अभी जैसे कमलप्रीत है जहाँ पे वो रहती है वहां पे काफी सारा हॉट एंड ह्यूमिड है, तो हम लोगों ने अपनी क्रम कोट करके उसको अच्छे से अभी फ्रिज में डाल दिया है और अब हम गनाश बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गनाश बनता कैसे है, उसके बाद जो क्वेश्चन और क्वेरीज है वो हम देख ले लेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल ट्राई टू सी दैट हाउ द गनाश इज मेड, एंड देन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द गनाश। So I have this chocolate melter. Otherwise, you can melt your chocolate in a cup. So अभी जैसे कमलप्रीत के पास, Kamalpreet, your voice was not audible. Can you please repeat it once Yeah, again? I have this chocolate melter. I have a small pot to melt the chocolate. But if you don't have it, you can melt it in a microwave in the interval of 30 seconds. You don't put chocolate more than 30 seconds in the microwave, or you can use a double boiler, stirring it continuously. So अभी जैसे कमलप्रीत के पास ये चॉकलेट मेल्टर है तो वो ये यूज कर रही हैं। अच्छा कमलप्रीत, there was one request coming a lot, that Yes. is it possible that we can do a colorful ganache here? Yes, I am doing a colorful ganache only because it's a vanilla cake. Okay, okay, That's why I have used the white chocolate. okay. तो yes guys, we'll be doing the colorful ganache only. तो yes, moving forward. whenever जैसे अभी कमलप्रीत के पास है ये चॉकलेट मेल्टर, तो वो उसमें कर रही है। इफ इन केस आपके पास चॉकलेट मेल्टर नहीं है तो आप माइक्रोवेव में, ओटीजी में इसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स पे आपको रखना होगा, मोर देन 30 सेकेंड्स मत रखिएगा, अदरवाइज आपकी चॉकलेट जल सकती है। ओके, और 30 सेकंड उसके बाद बाद निकालना है, उसको स्टिर करना है और फिर दोबारा रखना है। हाँ, 30 सेकेंड्स के बाद आप निकाल के देखिए, चॉकलेट अगर मेल्ट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो फिर आप उसको वापस से रख सकते हैं 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, वो मेल्ट हो जाएगी, बट एक साथ बहुत देर तक मत रखिएगा। ओके, अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है एंड आप गैस पे मेल्ट करना चाहते हैं तो आप डबल बॉयलर का यूज करेंगे। डबल बॉयलर का मतलब होता है कि नीचे आप एक कुछ भी कटोरा या बर्तन रख दीजिए, उसमें आप डालिए पानी, उसके ऊपर आप एक और कटोरा रखिए और उसमें आप अपनी चॉकलेट रख दीजिए, और उसके बाद एकदम हल्की सी लो फ्लेम जो होती है ना, लो टू मीडियम फ्लेम, उसमें आप हल्के हल्के से उसको मेल्ट करती रहिए। तो ये होता है कि आप गैस पे कैसे करेंगे। बाकी ओटीजी और माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए आप रख दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, So here I have chocolate. I have the idea. That's why I have not measured it, but I need to show how much chocolate you need to take. So this, can you see my measuring scale? So
This is on care, like we did yesterday. And this is 59. This is around 92, 91, you can say. So we have to take 1:2 ka ratio. Like this is 91. So half of this we have to take the cream. Let me do it 100 only, as it's mentioned in the PDF. ओके कमलप्रीत जो आप कर रहे हो ना वो दिख नहीं रहा है, हल्का सा अगर आप नीचे कर सकें. वेट. Yeah, just a second. या अभी इट्स विजिबल. I've pinned the other camera now, it's visible. Yeah, it's Okay. 104. Okay. So we have to take 52 of cream. So I'm going to melt it. I am putting it in my boiler, my pot, and it's heating. So in another bowl, we will take the cream also. Okay. So now we are going to make the ganache. The ganache that we are going to make is going to be in the ratio of 2:1. What do you mean by 2:1 is that whatever amount of chocolate you are going to take, you are going to use half the amount of fresh cream here. Okay. For example, we have used 100 grams of chocolate here, so we'll be using 50 grams of fresh cream. Okay. This is the ratio Yes. that you're going to use to make your ganache. Whether it's a chocolate ganache or you're making a white ganache, the ratio always remains same for a pouring consistency here. Okay. So अभी आप जो गनाश बना रहे हैं उसका रेशियो होगा 2:1. 2:1 का मतलब होता है कि आप जितना चॉकलेट लेंगे उसका आधा आप फ्रेश क्रीम लेंगे. सो अगर आपने 100 ग्राम्स चॉकलेट ली है तो आप 50 ग्राम्स लेंगे अपना फ्रेश क्रीम. दोनों को एक साथ एक बर्तन में रखिए और उसको मेल्ट कर दीजिए. दिस इज ऑल Like हाउ एक यू साथ मेक. नहीं रखना slowly. ओके ओके. We have measured it differently. In this is I have measured in another bowl. I'm going to microwave for 30 seconds. A little heat I'm going to give it. या. So we can take some portions till the time my chocolate is melting, if there are any. Okay. Okay. So you have kept the cream to melt, right? I mean, cream to get heated up. It was not. I have put the chocolate to melt. Okay. Cream just need 30 seconds, so I will do it later. ओके. सो आप सबसे पहले अपनी क्रीम चॉकलेट को हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसमें क्रीम को जो है वो ऐड कर देंगे. ओके. सो यस, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस. सो somebody was asking. Yes. Just a second. The ratio is specific for pull me up cake, or it can be used otherwise also. This is for any ganache. 2:1 ratio is for any ganache. Whether you are making to put on the cakes, whether you are making it for piping, the perfect ratio for a ganache is 2:1. Not with drips. Drips have a different ratio. ओके. सो अगर आप कोई भी गनाश बना रहे हैं तो उसका रेशियो 2:1 ही रहेगा. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ पुल मी अप केक के लिए 2:1 का गनाश यूज कर सकते हैं. जितने भी केक्स बनते हैं वो बेसिकली, मतलब जो गनाश बनते हैं वो बेसिकली 2:1 के रेशियो में ही काम करते हैं. ओके. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दैट कैन वी यूज मलाई आल्सो इंस्टेड ऑफ फ्रेश क्रीम? Yes, you can use light, but it should not have any milk in it, and you need to whisk it well before using. ओके. सो अगर आप मलाई यूज अगर करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, बट आपको उसको whisk करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और उसमें कोई दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ मलाई होनी चाहिए. Kamalpreet, your voice is getting a little, glitchy in between for some reason. Is it better now? Is it still glitching? No, it is better now. Okay. And also the cream that Kamalpreet used here is the normal Amul fresh cream that you get in the market. That is the dairy cream, not the non-dairy one. Okay. The non-dairy is the whipping cream,
एंड द क्रीम दैट वी हैव यूज्ड हियर इज अ फ्रेश क्रीम। जो फ्रेश क्रीम होती है हम लोगों ने वो यूज की है, अमूल की जो आती है। अगर आप ये ना चाहें तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं, बस मलाई में दूध ना रहे इसका ध्यान रखिएगा, और यूज करने से पहले उसको अच्छे से ऐसे फेंट लीजिएगा। ओके एंड okay, so somebody is asking that the ratio that we are using here is the ratio that we use for the dripping consistency also. No, dripping it little is little different. ओके सो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का जो रेशियो होता है वो दूसरा होता है। अभी जो हम बना रहे हैं वो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का रेशियो नहीं है। ओके ओके सो जस्ट लेट मी चेक फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो यस गाइस, यू कैन सी दैट आवर चॉकलेट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अभी अराउंड हम लोगों ने इसको 30 सेकेंड्स के लिए रखा था, तो अभी ये मेल्ट हो रही है। ओके Kamalpreet, can you The please microwave, I am putting this. yeah. Yes, please, Saloni. Yeah, I was asking that a lot of people are asking that if this is the consistency not for dripping, then what basically is the consistency for dripping? Like We what is will the add ratio? milk in this. We will add milk in this. For Oh, pulmi cup okay, whipped, we have to add milk in this. okay. So जब भी हम क्रीम का मतलब ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या करेंगे कि हम हल्का सा मिल्क ऐड कर सकते हैं उसमें, उसको ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में क्रिएट करने के लिए। ओके And yes, Parishma, in the doll cake, you will put this acetate sheet on the top. Okay, like from where her skirt is starting, there you are going to put it. Okay. Sure, Radhika. I'm just trying to find your question. My Okay. chocolate is So almost some melted. so Kamal, please, somebody is asking that, ma'am, if I give it to the customer, it starts setting after some time. So what could be a remedy for this? That's why we are using milk, and it should not get set after adding milk. But if still melts, you can ask customer to heat it a little, a very little, like for 30 seconds hardly. Okay. Yes, Priyanka, you can use the whipping cream by Tropolite. It is absolutely great. Okay. Okay, so somebody is asking that, ma'am, for how many days can we store this ganache here? Ganache can be stored up to a week without adding milk. Okay. So अगर To आप use the उसमें ganache later on, you have to make it and you have to keep it in the fridge. Surface wrap it. You have to surface wrap it. The cling should stick to the ganache, and then you can put it in the fridge for a week. Before using, you have to heat it a little. ओके सो आप क्या करोगे कि आपका जो गनाश है उसको आप क्लिंग रैप करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो अराउंड 1 वीक के लिए, अगर उसमें दूध एडेड नहीं है तो। बट जब आप उसको यूज करोगे अपने केक के ऊपर तो आपको उसको हल्का सा हीट करना पड़ेगा, बिकॉज वो सेटल डाउन मतलब सेट हो जाता है वो, तो आप उसको वैसे नहीं यूज कर सकते। ओके Added 1 drop of green color. This Chef Master colors I have used. I should show it in this camera. This ओके is leaf green and sky blue to make it a turquoise. ओके सो अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया है, लीफ ग्रीन ऐड किया है और हम लोगों ने इसमें ऐड किया है ब्लू, राइट? Yes. सो हम लोग 1 drop लीफ ग्रीन each. एंड दिस इज द जेल कलर्स, राइट? Yes. These are the gel Not colors all gel by colors can be used. This is Chef Master. Otherwise, you can go for magic colors. That is good for chocolate. okay. So the color that Kamalpreet is using here is by Chef Master and it's a gel color. ओके हम लोग यहाँ पे जेल कलर यूज कर रहे हैं शेफ मास्टर का। आप चाहें अगर आप क्योंकि सारे के सारे जेल कलर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो जो कैंडी कलर्स या जो ऑयल कैंडी कलर्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं चॉकलेट्स में। ओके so if you do not want to use the gel colors, you can go with the candy colors that are available in the market. Okay
So there were few more questions. Okay, so somebody is asking that for dripping consistency, can we use 1:1 ka ratio? Dripping is a different thing. So let me answer it later because Okay, we don't using drip here. okay. Um, Yeah, I have kept my cream in the microwave for 30 seconds. My chocolate is completely melted. If you can see that. yes. So भी आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है. Guys, I can see a lot of question telling ki how are we going to send it to a customer. So if you will open the PDF note, so you will see that at the last, like on the last page, we have mentioned that how you're going to send it to a customer. Okay. आप ये अपना जो I पुल have में आप added a केक है, note in that. हाँ, आपको ये अपना पुल में आप केक कैसे आपको कस्टमर को देना है, इसका नोट एडेड है पीडीएफ में. तो आप एक बार प्लीज चेक करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे कस्टमर को सेंड की जाती है. ओके. So I have mixed up the cream and I am stirring it continuously. So this is our ganache is formed. So right now you can see we have added our cream also in it, and this is the consistency of ganache that we have created here. I will just switch to another camera. Okay. Kamalpreet, can you please show the consistency on this one? Yes. Allow me a moment. Sure, sure. No, In the no, front, in the top camera, can you see no, in the on side this? camera. Yeah, Yeah. yes. So you can see this is the consistency of the ganache that we need. जो हमें consistency चाहिए ganache की, वो ऐसी consistency हो. Okay. For हल्की सी. perfect drip, if you want to know, everybody was asking for drip. This is 2:1. The 1:1 is not perfect. The 2:1 is not perfect. But if you will use a little less cream, like I have used in 100 grams of chocolate, I have used 50. You can use around 40 grams of chocolate and you will get the perfect drip. This is not perfect. This will not drip properly. Can you see? But a little less cream will give you a perfect drip. Okay. So just a sec. Colors on my face. Yeah. Okay. Okay. So this is the ganache we have made. This is little hot. This is warm. So what we are going to do next is we are going to take 2 tablespoons of milk. And सो अभी आपने देखा कि हमारी जो क्रीम है, आई मीन सॉरी, जो गनाश है, हम लोगों ने उसमें अराउंड 2 टेबलस्पून हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है. हम अभी मिल्क ऐड कर रहे हैं उसमें. this is on room temperature, or you can heat it a little. I am heating it a कमलप्रीत, little. Otherwise, yeah. कमलप्रीत, दैट टॉप कैमरा का वीडियो हैज स्टॉप्ड. I have heated the milk for around नो 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 20 नो, to योर 30 टॉप seconds. कैमरा का वीडियो हैज स्टॉप्ड. Okay, just a moment. Yeah, is it now available? Can you see it now? या वी कैन सी इट Yeah. नाउ. We have heated the milk for 30 seconds. ओके. सो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना उसमें मिल्क ऐड किया है हमारे गनाश में. Okay, we are adding little bit of milk in our ganache, and we have taken 2 tablespoon of milk. We have heated it for 30 seconds, and now we are adding it in the ganache. हम लोग अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने अपने मिल्क को हीट किया है.
2 टेबलस्पून हम लोगों ने मिल्क लिया था और उसको अपने गनाश में हम लोगों ने ऐड कर दिया है. So we have the pull me up cake ganache is ready. We'll, this is little hot. Let it come to a warm temperature. Let me take out the cake till the time. यस, सो अभी ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसलिए हम लोग अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देंगे. एंड तब तक हम क्या करेंगे कि हम अपना केक बाहर निकाल लेते हैं जो हम लोगों ने अभी रखा था अंदर सेट होने के लिए. Still hot. So I have my ganache ready. I have some sprinkles to top it over on the side camera. Can you see this colorful sprinkle? जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक. यस, This kind of a colorful sprinkles we are using. सो ये कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं जो अभी हम यूज करेंगे अपने गनाश पे, And आई मीन अपने this केक पे. type of edible glitter. एंड ये है ईडेबल ग्लिटर्स जो हम यूज करेंगे. कमलप्रीत, कैन यू टेल अस द ब्रांड ऑफ द ईडेबल ग्लिटर? This is, I think, Bake Heaven. ओके. You can take any edible glitter. Yes. Okay, so there were few questions. Yes. Let's take the questions till it's getting a little warm. Yes. Okay. So there was a question ki I kept the ganache jar in the fridge in the morning, and when I was about to cut the cake at the night, I microwaved it for like 30 to 1 minute, and the sauce became very sour. So what could be the reason for it? Is it the heating? No, the heating doesn't affect, and if it's turning sour, you can do it on 10 seconds interval. Don't do it more than that. Ganache doesn't need more heating. It will come to a temperature in 10 seconds also, or you can put it on a room temperature if you're not in a hurry. Okay. There's a question that can we use the normal colors also? Normal colors, no, you will get patches in the chocolate. There are specific colors for chocolate. Either go for powder, either go for Magic Colors is a good brand, and even this is a good brand, Chef Master. Yes. And can we use the homemade colors? Homemade colors, yes, they are very good. Like from beetroot extract, you can take out the color. ओके, so somebody is asking कि मैम चॉकलेट में हम जब मिल्क यूज करते हैं तो वो चॉकलेट गाढ़ी हो जाती है, ऐसा क्यों? आई थिंक रेशियो सही नहीं ले रही है ना वो. चॉकलेट में हमने मिल्क ऐड किया, ये गाढ़ी नहीं हुई, आप देखो. दिस इज फ्लोई मिल्क ऐड करने के बाद. यस. You see, this is flowy and you may have added the milk in chilled milk. You may have added. Boil it a little and then add. Heat it a little. ओके. एंड yes guys, don't. Okay, so somebody was asking. नहीं नहीं सिमी, वी हैव यूज्ड मिल्क. मिल्क हम लोगों ने यूज किया है, मिल्क पाउडर नहीं यूज किया है. ओके. मिल्क पाउडर नहीं, हमने मिल्क यूज किया हीट करके. एंड हम लोगों ने अपना केक को रेफ्रिजरेटर में रखा था, फ्रीजर में नहीं. हम लोगों ने उसको फ्रिज में रखा था, फ्रीजर में नहीं रखा है हम लोगों ने अपना केक. अगर आप इसको फ्रीजर में रखोगे और उसके बाद आप जब ये गनाश डालोगे तो ये बिल्कुल जम जाएगा. यस, सो उसको फ्रिज में रखिए. ओके. So somebody is asking that, ma'am, why have we heated the cream as the chocolate already was very hot? Could we have not put it directly into the chocolate? No, because if you will put a room temperature cream or a chilled cream, your chocolate will seize. अगर आप नॉर्मल चॉकलेट जो आपने मेल्ट करी है उसमें ठंडी कोई चीज डालेंगे, मिल्क हो, क्रीम हो, कुछ भी, तो आपकी चॉकलेट एकदम से सीज कर जाएगी. इसलिए हम जो भी चॉकलेट में कभी ऐसे ऐड करते हैं तो थोड़ा उसको हीट करके करते हैं ताकि आपकी चॉकलेट सीज ना हो. Okay. And Sumidhi, no, the food colors do not have any kind of taste or flavoring. They're just normal colors. Like if you're using good brands, so they will just be the normal colors. If you're not using good brands,
you might end up getting a very salty taste in whatever place you're adding it. Yes. For chocolate, like if you're using for whipped cream or something, normal brands color can be used, but for chocolate, this is very delicate thing. You should use good colors. Whipped cream में अगर आप डालेंगे colors, whipped cream में अगर आप colors डालेंगे कोई normal company के भी तो whipped cream में फिर भी चल जाएगा. But chocolate बहुत delicate होती है, इसमें कोई अच्छी company के colors use कीजिए. Okay. Somebody was asking that how we are going to use the ganache after taking it out from the refrigerator after a week. You have to melt it a little and then you have to add milk. If you're storing it, never store adding the milk, just cream and the chocolate you have mixed. That ganache you have to store and you have to take it out, heat a little, then add milk. Okay. And what is the reason why we have used the milk here? We have used the milk here to get it little flowy because it was not flowy before. Okay. Um, just a second. Yes, Saloni, sure. We will try to come up with that glass too. Yes, Manpreet, magic gel colors are great. You can use them. Okay, so there's a question, Kamalpreet, that can we make a ganache using whipped cream and milk? I No, mean, whipped cream or milk. no, that will not give you a proper ganache. That is actually not a ganache. This is chocolate and cream only. Fresh cream की जगह आप मलाई use कर सकते हो, but no other ingredients. Okay, so somebody is asking that can you please tell me how to prevent melting while applying it? While applying what? Whipped cream? Yeah, whipped cream. I told you yesterday also, take a room which is on a cooler side or put an AC, sit in an AC room. Or if your cream is on the right temperature, like we whipped it yesterday, you can see I'm not working in AC, I am working in a normal kitchen and my cream is not melted at all. If you have the right perfect whipped cream, this will not melt. Use the method which I have told you yesterday. Get the soft peaks first, then the hard peaks. It will give you perfect whipped cream. Yes. So, okay, so somebody is asking that after wrapping it with acetate sheet, how much for the minimum time we need to keep the cake in the fridge? There is no specific time. You can, if your ganache is ready, you can pour at that time only. But if you want to, for a safer side, you can store it for 10 minutes is good enough. Okay, so just a second. There were a few more questions. Okay, so somebody is asking that can you please suggest some good brands for chocolate color? This Chef Master is good. You can type it Saloni. Okay, Chef sure, sure. Master is good. Magic Colors is good. Or any powder chocolate color you get. These are the gel colors which can be used. Or otherwise, if you get powder colors for chocolate, not that food color we used at home, the powder colors for chocolate are there. You can use that. Yeah, I have wrote it down. And there are few more questions. Just a second. Hmm. Where was I? Yes, Vijay, you can use the double boiling method for melting your chocolate. मिल्क को हम लोगों ने 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया था उसके बाद उसमें ऐड किया था इफ यू वांट Can टू we hold the फ्लेवर question for some time? I'm going to pour. या श्योर जस्ट अ सेकंड It's at good temperature. आई विल जस्ट पुट दैट वन इन द Spotlight. spotlight. Yes, डन एक सेकेंड कमलप्रीत इज इट पॉसिबल कि आप वो वाले कैमरे को थोड़ा सा दूर कर सकें बिकॉज उस वाले में ज्यादा सही से दिख रहा था ठीक है
अब बेटर है? जस्ट अ सेकेंड. Yeah. या अभी सही है. ठीक है, we are pouring the ganache we made. Okay. सो यू कैन सी हम लोगों ने अपना गनाश जो है उसको हमारे उसमें डाल दिया है. केक में एंड हमने आप pour देख कर सकते हैं कि वो जो शीट है वो इतने अच्छे से लगी हुई है कि वो वो नहीं हो रही है. गनाश आपका नीचे नहीं चॉकलेट, हाँ, गिर रहा नीचे साइड नहीं में. आ रहा है आपका गनाश. So we are going to put some sprinkles on it. एंड हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं अपना थोड़ा सा स्प्रिंकल्स. Decoration is all over you, like how you want to decorate it, that will absolutely be your choice. Yes, you can take anything. You can put nutties chocolates in this. You can put chocolate chips in this. You can put Ferrero Rocher in this. Anything you like. Anything you feel that will look good while flowing, you can put that. Or if you don't have anything, you can put a lot of glitters. Yeah, I'm putting on some glitters here. And now you can see we are just putting little bit of glitter in it. अभी हम glitter डाल रहे हैं उस पे थोड़ा सा. Yeah. I would like you to see from the top what it looks like. Okay, Can you just a sec. spotlight on another camera? Yeah, sure. Just a second. Yeah, done. Just a second, So I'll show you when we pull it how the effect is. Let me clean my counter a little. अभी यू कैन सी कि अभी ऊपर साइड बहुत सारा हम लोगों ने जो भी चीजें था वो सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया था. ओके, अभी थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लें, उसके बाद वी विल शो यू. As somebody was asking कि how many type of colors are there. So there are liquid colors, there are gel colors, and there are powder colors, and there are oil colors. There are four different type of colors, out of which gel colors, powder colors, and oil colors are the colors that are used while baking. बेकिंग के टाइम पे आप तीन टाइप के कलर्स यूज कर सकते हैं. एक होता है जेल कलर, एक होता है पाउडर कलर, और एक होता है ऑयल कलर. जेल कलर बेस्ट कलर्स होते हैं बेकिंग के लिए, चाहे आप उसको अपने बैटर में ऐड करें, चाहे आप व्हिपिंग क्रीम में ऐड करें, चाहे आप अपने चॉकलेट्स में ऐड करें, वो इजीली सब में ऐड हो जाता है. बट जो आपका चॉकलेट्स होती हैं, कभी कभी कुछ जेल कलर्स अच्छे नहीं होते हैं, तो आप उसके लिए स्पेशल जो ऑयल कलर्स आते हैं, ऑयल कलर्स या जो कैंडी कलर्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं. ओके, सो देयर वर फ्यू मोर क्वेश्चंस. लेट मी जस्ट चेक कौन कौन से आंसर नहीं हुए हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम. Yeah. So are we ready to pull it up? Just a second, I will put that one in the spotlight. Yes. Just a little. हाँ, हल्का सा वी कैन डू, हल्का सा पीछे ले सकते हैं क्या हम लोग अपना वो केक को, ताकि वो अच्छे से दिख जाए. नहीं नहीं, ठीक है. ओके, या इट्स परफेक्ट नाउ. Sorry for the noise behind. My little kid is very excited for this. She's standing with me. And you can see the ganache flowing on the side. So yes, you can see how the ganache is flowing from the sides. आप देख सकते हैं कि गनाश कैसे ऐसे साइड साइड में फ्लो हो रहा है. So you can see from all the sides that the ganache is flowing.
From the top, you can see the glitter. It looks so nice. It looks so satisfying. From the So top, yes, you can see the sprinkles and the glitter effect we used. you can see that all the sprinkles here and all the glitter that we have used. आपको सारा का सारा टॉप व्यू में दिख रहा होगा स्प्रिंकल्स एंड जो ग्लिटर है. You always put a plate under this because the ganache may flow out of the board if you're using more of ganache. अगर आप जितना गनाश हमने बनाया है इससे ज्यादा अगर गनाश केक में डालेंगे तो एक प्लेट पे आपकी फ्लो कर सकता है बोर्ड के बाहर, तो हमेशा नीचे एक प्लेट रख के ही इसको पुल कीजिए. So remember, whenever you're working, I mean, whenever you're making these cake, try to keep a plate at the bottom because there is a possibility that if the ganache the ganache that is flowing here might end up going even out of the cake board. So keep an eye on the measurement or the amount of ganache that you're using, and if you're not sure, just keep a plate at the bottom. सब जो जितना गनाश यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो फ्लो होगा. तो अगर आप ये देखते हो कि गनाश थोड़ा ज्यादा हो गया है तो प्लीज नीचे साइड एक छोटा सा प्लेट रख दीजिएगा ताकि आपका जब वो गनाश पूरा फ्लो हो तो वो केक बोर्ड के बाहर ना जाए, अदरवाइज सब गंदा गंदा हो जाएगा. So, how was Jyoti, it? just I think it was great. I can see a lot of people have just loved it. That's good. Thank you so much. Yes, even I am getting some responses. I can also read some responses here. Thank you. Yes, so I think people have liked it. For doll cake, if you want to make a doll cake in this, you have to do a final layer also. And you just need to put the acetate sheet till the level just under the doll topper you have, just under that you have to put. This will give the same effect. Okay. Uh, एक second. Salonia, I can't hear you. Yeah, am I audible? Yes, now. Okay. दीक्षा, फॉर योर क्वेश्चन, लिक्विड कलर्स बेकिंग में जनरली नहीं यूज होता है क्योंकि अगर आप उसको व्हिपिंग क्रीम में डालोगे या अपने बैटर में डालोगे तो उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, तो इसलिए लिक्विड कलर बेकिंग में नहीं यूज होता. ओके, डू नॉट यूज Gel लिक्विड color. कलर्स इन बेकिंग, Gel यूज color जेल are best कलर्स. for baking. हाँ, they are Yes. like the best thing. Okay, so there were few more questions. I think we can come up with the questions. Okay, it's 3:15. Yes, quickly we can do the questions. Huh. Okay, there's a question that for how much time can the sheet hold the ganache in it? There is no specific time, but yes, not more than 15 minutes. You don't need to put ganache 15 minutes before. That is the good time. Otherwise, your icing will start reacting with the ganache and the ganache will start flowing from the edges. Okay, so मतलब जितनी जल्दी आप यूज कर लेंगे उतना ही अच्छा है. Yes. तभी Okay. मैंने नोट्स में भी लिखा है अपने कि अगर आप किसी को कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस केक को लेके तो अलग से आप जार में गनाश लेके जाइए. If you're traveling with this cake, I have mentioned in the notes that take your ganache in a jar. Yes. Um, okay, so somebody was asking, Priyanka, for your question, whipping cream is used for doing the crumb coating and the final coating or the decoration. But when you are making the ganache, you are not going to use the whipping cream. You are only supposed to use the fresh cream. Okay? Yes. गनाश में हमेशा फ्रेश क्रीम यूज होगा, बट जब आप केक को डेकोरेशन कर रहे होंगे या कोटिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपकी whipping cream यूज होती है. Okay.
Okay, so there are few more questions, but I think it's 3:17. So I think we Yes. will be ending the session, and You whatever can always questions ask are. the questions in the chat box. Yes. So, yes, guys, the chat box will always be available there, and you can ask all your question and queries there, and they will be answered every time you ask any of it. So, don't worry कि class खत्म हो गया तो अब मेरे questions का answer नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. Okay? आप easily अपने सारे questions वहाँ पूछ सकते हैं, and आपको हमेशा वहाँ पे answers मिलेंगे. Mm. Okay? I am And available to assist you all. yes, so don't worry. If, even if the course is done, you can still ask your questions, and you will always get the answers there. Okay, and I will just share my screen and will show you that from where you can download your certificate and where you can watch the recordings, as there were still few confusions about it. Okay, so अब मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि आपको ये सारी चीजें recordings वगैरह कहाँ पे मिल जाएंगी. Okay. So I have shared my screen and I hope my screen is visible. Uh, Yes. okay, thank you. Okay, so you're going to do the same thing. That means you're going to open the Pankhuri app. आप Pankhuri app open करेंगे, and as soon you will open the Pankhuri app, you will be able to see the three lines at the bottom of the app. आपको app में सबसे नीचे तीन lines दिख जाएंगी, उस पे click करिए. You will find an option called as orders and bookings. आपको orders and bookings का एक option दिखेगा, उस पे click करिए. And once you will click on orders and bookings, you will be able to see the course there. Okay? जब आप orders and bookings पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका course दिख जाएगा. उस पे click करिए. You can just click on download certificate and you will be able to download the certificates. आप download certificate पे click करके certificates download कर सकते हैं. For asking all your question and queries, you can just click on the chat box and you will be able to ask all your questions there. Salonia, are you there? Yeah, I'm so sorry. This is happening for some reason that whenever I'm showing my screen or anything like that, no, I'm just getting out of the meeting. I'll just try it once again. So yes, I will quickly try to show you. Just go to Pankhuri app. Once you will go to Pankhuri app, click on the three lines at the bottom of the app. जो app में सबसे नीचे तीन lines हैं, उन पे click करिए. Go to orders and bookings. Orders and bookings में जाइए. And there you will be able to see your course. आप जैसे ही orders and bookings में जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका course दिख जाएगा. Just click on your course. अपने course पे click करिए. डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड सर्टिफिकेट एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट. For asking your question and queries, just click on go to course group and you will be able to ask all your question and queries. सारे के सारे question and queries आप go to course group में पूछ सकते हैं. For the recordings, you can just click on view recordings and you will be able to watch the recording. Recording के लिए आप view recordings पे click करके recordings देख सकते हैं. पीडीएफ के लिए आप मास्टर क्लास नोट्स पे क्लिक करके पीडीएफ चेक कर सकते हैं. For the PDF, you can just click on masterclass notes and you will be able to check the PDF. After that, if you move down a little, you will be able to see all the products being linked down here. सारे के सारे products यहाँ पे already linked down हैं, आप check कर सकते हैं उनको. And all the upcoming master classes and all the upcoming classes are there. If you want, you can enroll yourself for these two. सारे के सारे upcoming जो classes हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनके लिए भी अपने आप को enroll कर सकते हैं. So yes, so yes, this was all about today's class, and I hope you all have liked and loved it. And if you have, I will really request you to please rate us on Google Play Store. That Saloni, will your be voice of is not great audible. help. We can't hear you. So yes, this was all about today's class and this was all about today's session. I hope that you all have liked and loved it. And if you have, I will really request you to please, please, please rate us on Google Play Store. That will be of great help. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमें गूगल प्ले स्टोर पे रेट करिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ओके.
So yes, guys, I think we will be ending the session now. I hope to see you all in some of the other courses. Till then, bye bye. Take care. Have a great day, and thank you so much, Kamalpreet. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Bye, everyone.